everyone. Today we are gonna study about kidney. The main unit of filtration is kidney, and the functional unit of kidney is nephron. Right? It is here. So this is the structure of kidney. Having the outer side is renal cortex. Then there is space which is called space between two medulla is called renal canal, एंड देयर इज़ रेनल मेडुला इन द इनर साइड. ठीक है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये वाला, ये पूरा रीनल कॉर्टेक्स है. और ये जो दो मेडुला के बीच में ये कोई चीज़, ये जो स्पेस दिख रहा है उसे हम रीनल कॉलम कहते हैं. एंड देयर इज़ अ रीनल पिरामिड. यू कैन से दिस इज़ अ मेडुला, राइट. इट हैज़ बेस एंड एपेक्स. ठीक है. द opening of medulla is called renal calyx, okay, on the apex side. And these all apex of renal calyx, not of renal calyx, renal calyx minor की जो ओपनिंग के बाद जहाँ पे लार्ज स्पेस एरिया बनता है उसे हम रीनल मेजर कैलेक्स कहते हैं. ठीक है. देन these lines or these tubes like are also called renal papillae. Now when artery or vein and the nerves meet together in this space of kidney is called renal hilum, and these goes to brain and heart and to the other areas. Okay. And this is the outer part of the kidney, that is renal capsule. So urine drainage, what is the path of urine drainage? Okay, that the functional unit I say that it has nephron. It collects duct. ठीक है, collecting duct of nephron के through papillary duct में जाएगा. Okay, from here to here. Okay, renal calyx. Like in medulla there will be nephron, and then from nephron it will come to papillary duct. These are the papillary ducts. Then through papillary ducts it will came to minor ilex, then major, then renal pelvis, and then urethra, and then urinary bladder. Tissues of kidney. किडनीज में कौन कौन सी टिश्यू लेयर प्रेजेंट होती है? रीनल कैप्सूल, स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो बेसिकली जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है हमारे, उसकी बहुत स्मूथ और पतली ट्रांसपेरेंट शीट प्रेजेंट होती है. रीनल कैप्सूल का फंक्शन क्या है? वो बेसिकली एनी ट्रॉमा, एनी शॉक वी गॉट, उससे प्रिवेंट करती है हमारे किडनी को. Adipose capsule, a mass of fatty acid surrounding the renal capsule, provide protection and hold of kidney in the place. Adipose capsule में जो है यहाँ पे हमारा फैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो रीनल कैप्सूल को सराउंडेड करते हैं. इसका मेन रोल होता है हमारा प्रोटेक्शन एंड होल्ड द किडनी इन द प्लेस. Okay, now the third tissue in the kidney layer is renal fascia. It is a thin layer of dense irregular connective tissue that anchor the kidney and abdominal wall. Basically it helps to attach the kidney with the abdominal wall. Okay. Now the internal anatomy of kidney. Now in जैसे कि I show you in the picture of anatomy of kidney. That is renal cortex, superficial, it's from the outside, and its color is red, light red region. So how we will know that where is the cortex? It is from the renal capsule to the base of renal pyramids, and it contains the function unit, that is nephrons. Renal medulla, a deep dark reddish brown inner region. It is a cone shaped pyramid, and the pyramid, each of them is has base towards the cortex and apex towards the renal papillae, pointed towards the hilum. Now the papillary duct.
Okay, the whatever the filtrate occur in nephron, it is drained into papillary duct with the pyramid, and this duct have lead to be like followed to be into the cup like structure, that is minary calyx, which receives the filter from the papillary duct, and the major calyx, these all filter which receive from papillary duct by minor calyx is collected in the major calyx. Now renal pelvis, from major calyx the urine drained into a larger cavity is renal pelvis, and from there it enter to ureter and then to urinary bladder. What is renal sinuses? Contains a part of renal pelvis, कैलेक्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो रीनल साइनस क्या है, जिसमें कि हमारा रीनल पेल्विस आ जाएगा, मतलब मेजर कैलेक्स से जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, रीनल पेल्विस में, और उसके बाद उसमें जो भी वेन्स होंगी या वेसल्स होंगी वो सारा। ठीक है, तो हम इसे रीनल साइनस कहते हैं।